अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सो 10th क्लास की जो इस्लामियात है वो आज हम सारी की सारी इसी एक सेशन के अंदर करेंगे और आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है तो इंशाल्लाह आपकी इस्लामियात की मुकम्मल प्रिपरेशन जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनकी हो जाएगी। उर्दू का मैंने क्रैश कोर्स अपलोड किया था एंड इंग्लिश वाले बच्चे देवर सेइंग के सर हमारा क्या कसूर है, हमारे लिए भी जो है वो क्रैश कोर्स बना दें। तो चलें जी, इस्लामियात का इंग्लिश का जो क्रैश कोर्स है वो भी आपके सामने आ चुका है और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों को इनवाइट करें, सबको जल्दी से बुलाएं कि आ जाएं जनाब। क्या एक ही सेशन के अंदर जो है वो सारी इस्लामियात की प्रिपरेशन मिल के करते हैं। अपने जो आपके कॉलेज के, अपने स्कूल के जो दोस्त हैं उन सबको लिंक शेयर करें और सबको बुलाएं। साथ में चैट बॉक्स जो है उसके अंदर भी आप लोग आपस में मुझे साथ साथ कमेंट्स में बता सकते हैं आंसर्स को, और नीचे कमेंट्स के अंदर भी आप मुझे जो है वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उनसे आप मुझे आगाह कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अमर बिन अब्दुल वॉज किल्ड बाय हु? अमर बिन अब्दुल वॉज किल्ड बाय हज़रत अली। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द मोट वाज डग ऑन विच साइड ऑफ मदीना? सो इट वाज डग ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ मदीना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिसीजन वाज टेकन बाय हज़रत साद बिन मुआज अबाउट द यंगेस्ट ऑफ बनु कुरैज़ा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, दैट दे शुड बी किल्ड। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉफ? तो जॉफ का क्या मतलब है? जॉफ का मतलब है द पार्ट ऑफ बॉडी वेयर हार्ट इज। उसके बाद द मीनिंग ऑफ तुताहिरून। तो तुताहिरून का क्या मतलब है? तुताहिरून का मतलब है यू डिक्लेयर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द मीनिंग ऑफ अदइया। अदइया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदइया? तो द करेक्ट ऑप्शन इज अडॉप्टेड सन्स। उसके बाद द मीनिंग ऑफ मस्तूरन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मस्तूरन? द करेक्ट ऑप्शन इज what is the correct option? Yes, that is written. उसके बाद the meaning of hidadin. So what is the meaning of hidadin? The meaning of hidadin is sharp. उसके बाद next question है कि the meaning of बादूनी, ठीक है। So what is the meaning of बादूनी? The correct option is man of deserts. उसके बाद द मीनिंग ऑफ तासीरून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तासीरून? द मीनिंग ऑफ तासीरून इज दैट यू मे मेक कैप्टिव्स। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है द सजेशन ऑफ मोट वाज टेकन बाय? सो इट वाज टेकन बाय हु? इट वाज टेकन बाय हजरत सलमान फारसी, ठीक है। एंड व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ डिच? यानी गज़वा खंदक जो है उसमें कितनी मुसलमानों की स्ट्रेंथ कितनी थी? सो दैट वाज बेसिकली अबाउट 3000। उसके बाद व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ एनिमी इन द बैटल ऑफ डिच? सो व्हाट वाज द फोर्स ऑफ एनिमी? दैट वाज मोर देन 10,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज के विच कंपेनियन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सीरियसली इंजर्ड इन द बैटल ऑफ डिच? दैट इज हजरत साद बिन मुआज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ मेनी इन्फिडल्स वर किल्ड इन द बैटल ऑफ डिच? सो इट्स बेसिकली 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है दैट इज 10। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 है दैट इज द लेंथ ऑफ डिच इन द बैटल ऑफ ओहद वाज हाउ मच? 3.5 माइल्स। उसके बाद द विथ ऑफ डिच इन द बैटल ऑफ डिच वाज कितनी? विथ उसकी कितनी थी? दैट वाज 10 हैंड्स। उसके बाद द डेप्थ कितनी थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डेप्थ कितनी थी जनाब? डेप्थ थी 10 हैंड्स, ठीक है। डेप्थ भी इतनी ही थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द लिटरल मीनिंग ऑफ अहज़ाब। सो व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अहज़ाब? दैट इज क्लासेस या ग्रुप्स। उसके बाद एंड अ पार्टी ऑफ देम आस्क्ड परमिशन ऑफ द हॉली प्रॉफिट सेइंग व्हाट? सेइंग दैट आवर हाउसेस आर अनसेफ। उसके बाद कॉल द अडॉप्टेड सन्स आफ्टर देयर व्हाट? कॉल द अडॉप्टेड सन्स आफ्टर देयर फादर्स। उसके बाद द वर्सेस ऑफ सूरह अल अहज़ाब आर, कितनी वर्सेस हैं? सो इट्स बेसिकली 73, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वर्सेस इज 73। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अल्लाह हैज़ मेड द अडॉप्टेड सन, ठीक है। अल्लाह ताला ने अडॉप्टेड सन्स को क्या बनाया है? अल्लाह ताला ने अडॉप्टेड सन्स को बनाया है व्हाट? जी बताएं मुझे जल्दी से। दैट इज़ बेसिकली ब्रदर्स इन फेथ। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द वाइव्स ऑफ द हॉली प्रॉफिट विद मुस्लिम्स? सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट? दैट इज़ मदर, ठीक है। तो ये आंसर साथ साथ नीचे दिए हुए, लेकिन मैं आपको बता रहा था। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो फिलहाल अभी आपको लास्ट में करवाता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है वो जो MCQs हैं सारे के सारे उनको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं लेसन नंबर 5 में, जिसमें हम सेक्शन नंबर 4, 5 एंड 6 करेंगे और इसमें वर्सेस नंबर 28 to 255 के जो MCQs हैं उनको हम लोग करने लगे हैं। अल्लाह हैज़ सेंट द हॉली प्रॉफिट एज व्हाट? अल्लाह हैज़ सेंट द हॉली प्रॉफिट एज present holder and bearer of the glad tiding, warmer, inviters towards Allah and brightening sun. All of these, yes, all of these is the correct option. उसके बाद which wife of the holy prophet preferred the life of word and its adornment?
सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट वाइफ? ना तो हज़रत सौदा थी ना हज़रत उम्मे सलमा थी, दोनों दोनों ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। उसके बाद वी शुड रिलाई ऑन व्हाट? वी शुड रिलाई ऑन अल्लाह। एंड द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड ज़ैद बिन हारिस टू डू व्हाट? ठीक है, क्या करने के लिए कहा था? सो दैट इज़ बेसिकली टू डाइवोर्स, डोंट डाइवोर्स ज़ैनब। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, यस, डोंट डाइवोर्स ज़ैनब। अच्छा, फिर उसके बाद द मीनिंग ऑफ तुरितना। ठीक है, सो तुरितना का क्या था? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तुरितना? क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट इज़ बेसिकली यू डिज़ायर। उसके बाद द मीनिंग ऑफ सराहन। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सराहन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिपार्चर। ठीक है, एंड देन द मीनिंग ऑफ दैफाइन। So what is the meaning of दैफाइन? That is basically double. And what is the meaning of al khaira? जी, what is the meaning of al khaira? That is authority. ठीक है, and question number 8। उसके बाद question number 9 है the meaning of तुख्फी। तुख्फी का meaning है you hide। and the meaning of watran। so what is the meaning of watran? yes, the meaning of watran is that you need। and the meaning of muhdi, what is the meaning of muhdi? yes, the correct option is option C, who brings लाइट। मुफ्ती, मुफ्ती, सॉरी मुफ्ती, नॉट एक्चुअली। ये जो वर्ड्स हैं कुरान मजीद के, ये थोड़े से मतलब पढ़ना इनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए शायद जो है ना वो मैं इसको सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहा। द मीनिंग ऑफ बुकरतम व असीला। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुकरतम व असीला? दैट इज़ डे एंड नाइट। उसके बाद यलकौना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यलकौना? दैट इज़ बेसिकली दैट दे विल मीट। एंड द तुरजी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तुरजी? सो द मीनिंग ऑफ तुरजी इज़ इफ़ यू डिज़ायर। and the meaning of azalta। so what is the meaning of azalta? the meaning of azalta is that you set aside। and Hazrat Zainab bint Hajash was married with what? जी, so किनसे उनकी शादी हुई भी थी? she was married to Hazrat Zaid bin Haris। and the meaning the name of which companion of the Holy Prophet has been mentioned in Quran? जी, so what is the correct option? that is Hazrat Zaid। and the adopted son of Holy Prophet was, yes, obviously Hazrat Zaid। तो इस चैप्टर के भी हम लोगों ने कर लिए MCQs। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन नंबर 6 की तरफ, और इसमें हमारे पास हैं वर्सेस नंबर 53 टू 73। ठीक है, और इसमें व्हेन यू आर इनवाइटेड, ठीक है, सो व्हेन यू आर इनवाइटेड, तो व्हाट यू शुड बी डूइंग? व्हेन you are invited, you should enter when you are invited, okay? and if you spend time in talking, so what you should do? you should if you spend time in talking, the host will be inconvenient। उसके बाद the benefit of veil। so what is the benefit of veil? the benefit of veil is that it makes them polite। ठीक है, no it yes, the benefit of veil, जी, what is the benefit of veil? the benefit of veil is that it protects them from no sunlight, no it is safeguard for movement, no it makes them beautiful, no it makes them polite। yes, okay। उसके बाद the meaning of du'itum। so what is the meaning of du'itum? that is if you are invited। and ta'imtum। so what is the meaning of ta'imtum? your meal is and like you have eaten। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं the meaning of इंतशिरु। इंतशिरु means that you should disperse। ठीक है, आपको चले जाना चाहिए वहाँ से। and then question number 7 is that it is essential before entering the house of the Holy Prophet to what? to get permission। and the meaning of yastahi। so what is the meaning of yastahi? जी, what is the meaning of yastahi? बताएं जल्दी से मुझे। yes, obviously you are right, it is he feels shy। shy। उसके बाद इhtamalu। what is the meaning of ihtamalu? the meaning of ihtamalu is that they carried the burden। और then the meaning of yudneen। so what is the meaning of yudneen? the meaning of yudneen is that draw। ठीक है, उसके बाद the meaning of jalabib। what is the meaning of jalabib? yes, cloaks, चादरें। and al-murjifun। जी, what is the meaning of al-murjifun? that is option B, alarmist। उसके बाद लनफ्रियन्ना का। ठीक है, लनुफ्रियन्ना का। so what is the meaning of लनुफ्रियन्ना का? that is to put against। उसके बाद वमा युद्रिका। what is the meaning of that word वमा युद्रिका? so that is what you know। उसके बाद वजी। what is the meaning of वजीहन? जी, question number 15, the meaning of वजीहन, that is respectable and esteemed, both B and C। अच्छा, next zuluman। what is the meaning of the word zuluman? so that is tyrant। ठीक है, and then the meaning of ashfaqna। question number 17, ashfaqna, that is they were frightened।
And juhulan, what is the meaning of juhulan? That is illiterate, jahil. What is the meaning of qawlan sadida? Yes, what is the meaning of qawlan sadida? That is to the point word. And then the knowledge of the day of the judgment is with who? That is with Allah. ठीक हो गया? अच्छा, so let's move next to the next chapter, and that is Surah Mumtahinah. And in section 1 we will talk about verses number 1 and 6. Okay, so first question is that infidels desire, what they desire? They desire that Muslims become infidels. And Hazrat Ibrahim asked Allah for the forgiveness of his father. ठीक है? So what happened? He had promised his father. ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद when Hazrat Ibrahim could not make the environment environment Islamic, so what happened? Yes, he adopted the environment. Okay, and then the enemy of the Muslims are, who are the enemies of the Muslims? They are basically the enemy of Allah. And the number of sections in Surah Al-Mumtahinah, यानी कि Surah Al-Mumtahinah में रुकू कितने हैं? It's 2. And the verses in Surah Al-Mumtahinah कितनी verses हैं? That is 13 verses. And the literal meaning of Al-Mumtahinah, what is the literal meaning of Al-Mumtahinah? That is providing and testing. Yes, both B and C. ठीक है? And both A and C, sorry, examining and testing. And the word of Surah Al-Mumtahinah में words कितने हैं? जी, कितने words हैं? That is 348. And the meaning of tulkun, so what is the meaning of tulkun? So that is you post. And tusirruna, what is the meaning of tusirruna? That is that you hide. And in yashqafukum, so what is the meaning of this word? If you have the upper hand. ठीक है? And then the meaning of bara'u, what is the meaning of bara'u? Yes, that is isolated. And what is the meaning of yarju? G. Question number 13, yarju, that is he hopes. And which prophet of Allah should be followed for the treatment with infidels? G. Who should be followed? It's basically Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. So we are done with the surahs, and then we move to yes, we are not done, we have just done first 6 ayahs, and this is the last lesson on Surah Al-Mumtahinah, verses number 7 to 13. So question number 1 is that the woman who migrated took oath. The woman who migrated took oath. What oath did they take? They would not commit theft, they would not commit adultery, they would not kill their children, all of these. And the women who migrate should be tested for Islam. And the nation upon whom is Allah's wrath, what is the name of that? So what happened? They should not be made friend. And the infidels are despaired of, inmate of graves. So what will happen? G. They will be given a life again. And if the infidels embrace Islam, so what are they? They are obviously they are our brothers. And adaitum, what is the meaning of this word? That is that you set enmity. And antabarrau, so what is the meaning of this word? That you do kindness. And the meaning of zaharu, so what is the meaning of this word? That they helped each other. And the meaning of ism, what is the meaning of this word? Respect and esteem, both A and C. And fa'aqabtum, G. Question number 10, fa'aqabtum, you punish them. And yubayinu, so what is the meaning of this word? G. So that is basically that they take oath. And kad yansau, what is the meaning of this word? Question number 12, that is they were despaired of. And famtahiluhunna, so what is the meaning of this word? That you should test them. Okay. Acha, then next we move to hadith. So the best prayer according to hadith. So what is the best prayer according to hadith? G. That is astaghfar. And the basic topic of Quran, what is the basic topic of Quran? That is man. And the center of our love should be what should be the center of our love? That should be Allah. And the base of help in Islam. So what is the base of help in Islam? Question number 4, that is right and wrong. And then the Holy Prophet subdued his worst enemy with what? With politeness. And through prayer, man does what? Man connects Allah directly, contacts Allah directly. And the sermon of Friday is delivered before prayer. Okay? And jumping over the necks of the people on Friday is what? It is against rules and regulation, it's against ethics, and it's against humanity. So all of these.
and when salah is in progress, तो we should walk with peace, आराम से चलना चाहिए. And Ramadan is the which month of Islamic year? So that is basically the ninth month of Islamic year. And the meaning of fi sabilillah. See, what is the meaning of fi sabilillah? That is the way of knowledge, the way of social working, the way of jihad, or all of these. G. So what is the correct option? Yes, that is all of these. And Hajj is offered. Where Hajj is offered? Hajj is offered in Makkah. And according to Hadith, the fuel of hell will be will be what? That will be the giver of bribe and the taker of bribe. Rashi wal Murtashi kilahuma finnar. दोनों जहन्नम में A and B. And if one tribe is at fault, so what should happen if one tribe is at fault? We should be with the right. And to disobey, if our tribe is at fault, so we should be with the right instead of being with the tribe. And to disobey the commands of Allah is, तो अल्लाह ताला की अहकाम की खिलाफ वर्जी करना क्या है? That is the sin. And the basic of sins are, the basic kinds of sin कितनी हैं? Basic kinds of sin, there are two, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा. And one dash is prepared in heaven for the post who recites Surah Akhlaq. तो उसके लिए क्या बन जाता है? That is a splendid house. And how many principles of completion of faith? ठीक है, तो कितने हैं completion of faith के principles? They are basically two. And an important pillar of Islam. What is an important pillar of Islam? According to the Hadith, that is prayer, fast, and zakat. All of these are important pillars. And the players for a Muslim who keeps fast, तो क्या उसके लिए players हैं? That is two. And Hajj is obligatory for those who can afford it. How much? ठीक है, तो that is once in life. And how many benefits of showering blessing on the Holy Prophet are there? तो क्या हैं? जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का. That is 2. And Allah loves a person, Allah loves a person than his mother. How many times? Yes, that is 3 times, 10 times, 100 times, or several times. G. What is the correct option? That is several times. And then bribe giver is what? Bribe giver. G. What is the word that we use for bribe giver? That is Rashi, रिश्वत देने वाला. And bribe taker, that is Murtashi. And to understand the meaning of bribe, we should turn to what? G. We should turn to holy life of. To understand the meaning of bribe, we should turn to the holy life of Prophet ﷺ. And then good life and good manner is called what? क्या कहते हैं? That is called excellent manners, अखलाक हसना. And how many times Ramadan come in a year? तो साल में कितनी दफ़ा आता है? साल में एक दफ़ा आता है ना रमज़ान. And fast is the pillar of Islam. रोज़ा इस्लाम का कौन सा रुकन है? That is the third रुकन. ठीक है. And then हज कौन सा रुकन है? That is the fourth pillar. And he is not one of us who is not kind to our younger. And what is the remaining part of the hadith? That is respectful to other. ठीक है. And how many rights are there according to Sharia? ठीक है. तो that is basically 2. And the best among the people is one who, तो हदीस को मुकम्मल करें, who is a source of benefit to the other people. ठीक है. And then the perfect believer is one who excels others in wealth, manners, power, or knowledge. So the correct option is manners. And trend of bribe increases due to what? It increases due to lack of justice. And there is a contact between man and Allah during what? G. During prayer. And there are 2 players for one who does what? For one who keeps fast. And the sermon of Jummah is the source of guidance of G. Of teachings of Islam. And the meaning of Ra'in. Okay, so what is the meaning of Ra'i? That is guard. And it is duty to get knowledge for every Muslim. ठीक हो गया? अच्छा, so let's move forward quickly. And next we have the chapters. ठीक है? And the first one is taharat and physical cleanliness. So let's see what is there in taharat and physical cleanliness. So what is the first question is that if the body is impure, both is an obligation on if the body is impure, bath, it is basically bath is an obligation on man, woman, both men and women, or none of these, obviously both man and women. And during bathing, first we should wash what? We should wash the right parts. ये right दूसरा लिखा गया, it's basically RIGHT, right parts.
उसके बाद विच इज़ इंक्लूडेड इन फ़राइज़ वज़ू, तो ये चार यहाँ पे ऑप्शन हैं, तो इसमें से आपने बताना है कि फ़राइज़ वज़ू में इसमें से कौन सा है. टू वॉश द माउथ, वाइप द हेड विद वेट हैंड्स, टू वॉश द फीट, और ऑल ऑफ दीज, दैट इज़ बेसिकली ऑल ऑफ दीज. एंड हाउ मेनी टाइम्स वाटर शुड बी poured on the body during taking bath. जी, so it is basically 3 times. And the demand of gratitude of Allah is that man should do what? Man should speak words of gratitude, he accept his highness by heart, or obey his every command. So that is basically all of these. And question number 6 की तरफ चलते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द हॉली प्रॉफिट आफ्टर टीचिंग एंड वननेस वाज. सो व्हाट वाज दैट? दैट इज़ बेसिकली तहारत. एंड द लिटरल मीनिंग ऑफ तहारत, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ तहारत? So that is basically to be purified, cleanliness to be impurified. So that is both A and B. ठीक है, not C, A and B. And Allah loves those who, अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो कि keep cleanliness. एंड एब्लूशन बिफोर प्रेयर. जी, तो नमाज से पहले वज़ू जो है वो क्या है? दैट इज़ बाइंडिंग, यानी फ़र्ज़ है. एब्लूशन शुड बी स्टार्टेड विद व्हाट? आयतुल कुर्सी, आयत करीमा, तस्मिया या सूरह फातिहा. सो इट शुड स्टार्ट विद तस्मिया. ठीक है. एंड देन क्वेश्चन नंबर 11 इज दैट विच एक्शन शुड बी कैरिड आउट 3 times ड्यूरिंग एब्लूशन? टू गार्गल, क्लीन द नोज, और टू वॉश फीट, ऑल ऑफ दीज. And wiping of head with wet hand is called, so what do we call it? Mustahab, wajib, sunnah, or masa. So that is masa. And wiping the beard with wet hand, so उसको हम क्या बोलते हैं? That is basically halal. And what is forbidden during bath? जी, तो क्या forbidden है? That is singing and talking, both A and B. And the literal meaning of patience. So what is the literal meaning of patience? That is to stop, to support, to endure. That is all of these. What is included in makruhat wuzu? Bleeding, laughing, ablution at any pure place, yeah, to become unconscious. Ji, question number 16. So that is basically bleeding. That is makruh. And ablution gives the peace of mind, peace of body, spiritual peace, or all of these. Ji, so that is all of these. And गुसल सुन्ना कब है? ऑन एवरी फ्राइडे, ऑन ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, या ईद मिलादुन नबी. तो कब है? दैट इज़ ऑन एवरी फ्राइडे. एंड हाउ मेनी टाइम्स पेशेंस इज मैंशन इन द हॉली कुरान? तो सब्र का जिक्र जो है वो कितनी दफ़ा आया है पेशेंस का कुरान मजीद के अंदर? दैट इज़ अबाउट 75 टाइम्स. एंड द पार्ट ऑफ फेथ इज़, क्या है? ईमान का हिस्सा क्या है? जी, तो दैट एवरीवन नोज, दैट इज़ प्योरिटी. ठीक है, पाकीज़गी. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिया. यस, इट इज़ बेसिकली ऑल ऑफ दीज. तहारत भी, प्योरिटी भी, ग्रोथ भी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज. अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21. 21 है जी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ तहारत एनी प्रेयर इज़ नॉट एक्सेप्टेड. एंड व्हाट इज़ ऑब्टेन्ड बाय वुज़ू एंड गुसल? जी, तो क्या इससे हासिल होता है? दैट इज़ एक्सटर्नल क्लीनलीनेस एंड स्पिरिचुअल क्लीनलीनेस, बोथ ए एंड बी. ठीक है. उसके बाद पेन एंड ग्रीव कैन बी रिमूव्ड बाय होम? एंजल्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, या अल्लाह? तो ऑब्वियसली ये जो पावर है ये किसके पास है? अल्लाह के पास है. टू कीप द बॉडी ड्रेस एंड द प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ कॉल्ड, जी, क्या क्या कहते हैं इसको? क्वेश्चन नंबर 24. जी, दैट इज़ बेसिकली तहारत. एंड परफ्यूम एंड मुसवाक आर सुन्नाज ऑफ, इसकी प्रॉफिट की सुन्नत हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का. एंड देन क्वेश्चन नंबर 26 है, द रिवॉर्ड ऑफ प्रेयर विद मुसवाक इज़ बेटर देन द प्रेयर विदाउट रिवॉर्ड इज़ 70 टाइम. एंड फ़राइज़ वज़ू, तो फ़राइज़ वज़ू क्या हैं? कितने हैं? दे आर 4. एंड तहारत इज़ अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? दैट इज़ ऑफ अरबिक वर्ड लैंग्वेज. एंड तहारत ऑफ बॉडी का क्या मतलब है? तहारत ऑफ बॉडी का दैट इज़ क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी. एंड द स्पिरिचुअल तहारत, स्पिरिचुअल तहारत जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है? दैट इज़ बेसिकली दैट मैन शुड बी फ्री फ्रॉम सिंस. ठीक है, ऑप्शन डी. एंड गुसल ऑन द डेज ऑफ ईद, तो ईद के दिनों में गुसल क्या है? दैट इज़ मुस्तहब. एंड पेशेंस, व्हाट इज़ पेशेंस? जी, दैट इज़ बेसिकली इज़ शाइनिंग ऑफ द फेथ, हाफ ऑफ द फेथ, वेल्थ ऑफ हेवन, तो ऑल ऑफ दीज. एंड पेशेंस ऑफ होम वाज ऑफ हाईएस्ट लेवल, तो सब्र किसका सबसे ज़्यादा था? हज़रत अयूब का जो सब्र है उसकी बहुत, उसको ग्लोरीफाई किया गया. बिलीवर्स शुड प्रे फॉर द हेल्प ऑफ अल्लाह विद व्हाट? विद प्रेयर्स एंड पेशेंस. ठीक है. एंड देन यू विल बी गिवन मोर इफ़ यू विल व्हाट? इफ़ यू विल एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. एंड द पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया इज़ टू मेक मैन, इंसान को क्या बनाने के लिए है? इंसान को बेनिफिट देने के लिए, टू मेक द मैन बेनिफिटेड. उसके बाद मेथड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड
कितने हैं मेथड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड? दैट इज़ बेसिकली यस 3, यू आर राइट। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ के एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जनाब। तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज़ रिलेशनशिप ऑफ कंफर्ट एंड टेम्परामेंट या रिलेशनशिप ऑफ लव एंड कॉन्फिडेंस, बोथ ए एंड बी। एंड पायस मुस्लिम वुमेन तो क्या करती हैं? दे ओबे हस्बैंड्स। एंड इस्लाम हैज़ गिवन द अथॉरिटी टू वुमेन टू, क्या किस चीज़ की अथॉरिटी दी गई है? टू गेट ऑल द राइट्स, ये सारे राइट्स जो हैं, टू गेट शेयर इन हेरिटेज, कलेक्टेड पर्सनल वेल्थ एंड रन अ बिजनेस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि वॉर बिकम्स इनेविटेबल अगेंस्ट द एनिमी व्हेन मुस्लिम्स आर टीज्ड, देयर इज हिंड्रेंस इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, या बोथ एंड बी, या एनी वन ऑफ द फर्स्ट दीज टू कंडीशंस, तो एनी वन ऑफ दीज टू कंडीशंस। अच्छा, फिर उसके बाद द मीनिंग ऑफ जिहाद। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिहाद? दैट इज स्ट्रगल। एंड जहाद बिल माल, तो जहाद बिल माल क्या है जी? जहाद बिल माल इज टू स्पेंड वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह। And the pledge of family is the responsibility of what? The responsibility of man. And good treatment with wife is the responsibility of, obviously, that is husband. ठीक है। अच्छा, उसके बाद how many important pillars of family are? तो family के important pillars कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है, मियाँ बीवी। And the advantages of family life, क्या advantages हैं family life के? It is basically जो सब भी mention है all of these। उसके बाद kind of jihad, जिहाद की जो kinds of jihad कौन कौन सी हैं? जहाद थ्रू नॉलेज, जहाद थ्रू मनी, या जहाद अकबर। सो जी, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? दैट इज़ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और उसके बाद जहाद अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, ठीक है, तो अपने नफ्स के खिलाफ जहाद जो है, दैट इज़ जहाद अकबर। एंड फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड इज़ होम, ठीक है। एंड इस्लामिक सोशल लॉ हु हैज़ द स्टेटस ऑफ अ गार्ड, तो गार्ड का स्टेटस किसका है? मैन का है। द ड्यूरेशन ऑफ मिल्किंग अ बेबी इज़ कितनी? 2 years। एंड उसके बाद जो वर्ड जिहाद है, ये कहाँ से? वर्ड जिहाद इज़ फ्रॉम जहद, अजहद, जहुद या इज्तहाद, तो ये वर्ड कहाँ से आया? दैट इज़ फ्रॉम जहद। एंड जहद इज़ अ वर्ड ऑफ अरबिक लैंग्वेज। इन द साइड ऑफ अल्लाह द पर्पज़ ऑफ फैमिली लाइफ इज़, तो क्या है फैमिली लाइफ का पर्पज़? दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड फॉस्टिंग ऑफ चाइल्ड इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स। तो हमने जनाब जो MCQs हैं वो हमने कर लिए में। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई एम गोइंग टू शेयर दिस फाइल विथ यू, ठीक है, in the description of this video. You can just check the description and download this file and quickly go through the short questions. And I'm telling you this कि inshallah in your paper all of the MCQs and all of your short questions are going to be from this document, 31 pages document that I'm going to share with you. And do share this video with your classmates, and do not forget to subscribe the channel. And all the best for your paper. Please remember me in your prayers. Allah Hafiz.